Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance, which is typically created for the academic purposes, and in this series of videos we will discuss about the different topics of corporate finance, or you can say the financial management. These both topics are studied normally in MBA or MCOM, and different degrees related to business and finance. So here I'm going to start my first topic of corporate finance, which is related to chapter number 8, net present value and other investment criteria, or we can say overall it is capital budgeting techniques. So let's start this topic. First of all, in introduction, net present value and other investment criteria such as internal rate of return, payback period, and profitability index are different concepts of capital budgeting techniques. These all deals with future investment proposals with the help of all above techniques such as internal rate of return or net present value, payback period, and profitability index. We decide either to choose the project or leave to invest in the project. Among all four above, net present value and internal rate of return are two most common primary ways to estimate the future profitability, and these both have very important relation with each other, which will be discussed later in this topic, whereas profitability index and payback period are both secondary ways to assess the profitability. थोड़ा सा इसको मैं उर्दू में भी डिफाइन करता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो बुनियादी तौर पे ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इसको कहा जाता है, और इसके अंदर जो चार बड़े फेमस और पॉपुलर वेज हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को सिलेक्ट करने के लिए, उनमें सरे फहरिस्त नेट प्रेजेंट वैल्यू है, और दूसरे नंबर पे है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तीसरे नंबर पे है पेबैक पीरियड, और चौथे नंबर पे है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और ये जैसा कि आपने पढ़ भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के से रिलेटेड है, ना कि उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर है कि जो कि हम माजी में सिलेक्ट कर चुके हैं, बल्कि ये तमाम के तमाम डील करते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर हम उनको सिलेक्ट करने का जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो नॉर्मली ये चार तरीकों से हम उसको चूज़ करते हैं या उनको रिजेक्ट करते हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। Net present value is simply net sum of present values of cash outflow or initial investment and future cash inflows. Net present value के अंदर हम सबसे पहले तो कैश आउटफ्लो क्या है। आउटफ्लो वो इन्वेस्टमेंट की वो अमाउंट है जो अगर आप एक फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो अमाउंट जो आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो कैश आउटफ्लो कहलाएगा। और जो इनफ्लोज हैं वो उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो आपको अर्निंग होगी उसको हम कहेंगे इनफ्लोज। तो
Cash outflow is our investment which we plan to invest in a certain investment proposal, and cash inflows are those inflows which we expect to earn in future for a certain time period. For the calculation of net present value, we have to understand about present values calculation through using present value tables or manual calculation. One thing you should remember that if future cash inflows are same, then you can use present value of interest factor of annuity. Otherwise present value interest factor PVIF. यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ों के साथ आपको ज़रूर उनके बारे में मालूम होना चाहिए, और वो क्या है कि प्रेजेंट वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज़ को पहले तो समझना ज़रूरी है कि प्रेजेंट वैल्यूज़ हैज़ वाइटल इंपॉर्टेंस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आई थिंक पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है, which tells us that how much value is today for future cash flow, because there are various factors those minimizes the value of money as time passes. प्रेजेंट वैल्यू का अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर आप मतलब समझना चाहते हैं तो वो ये है कि फ्यूचर के अंदर जो हमें पैसा मिलना है उसकी आज हमारे लिए क्या वैल्यू है। क्योंकि अगर 5000 अगर मुझे आज मिल रहा है और 5000 मुझे एक साल बाद मिल रहा है, तो एक साल बाद जो मुझे 5000 मिलेगा वो वैल्यू के एतबार से आज मिलने वाले 5000 के बराबर नहीं है। बड़ी सिंपल सी इसके अंदर आप समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आप एज्यूम करें कि आपके पास अगर आज से लेट सपोज 5 इयर्स या 10 इयर्स पहले अगर 1000 रुपये था, तो क्या आज अगर आपके पास 1000 है तो क्या दोनों वैल्यू के अंदर बराबर है? डेफिनेट सी बात है कि वो जो आपके पास आज से 5 इयर्स या 10 साल पहले जो 1000 था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ वैल्यू जो है मनी की या करेंसी की वो उसके अंदर डीवैल्यूएशन होती है। डीवैल्यूएशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स, बट इंटरेस्ट रेट एक ऐसी चीज़ है कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ उसको डीवैल्यू करेगा। तो इसके लिए आपको प्रेजेंट वैल्यूज़ के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तो प्रेजेंट वैल्यू आप अगर तो आपके इनफ्लोज एक जैसे हैं तो आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी यूज करेंगे while calculating net present value. And if your future cash inflows are not similar, then you will use present value of interest factor. अब आ जाते हैं हम कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर नेट प्रेजेंट वैल्यू। If net present value is 0, then it means there is no profit or no loss. If net present value is greater than 1 or greater than 0, it means there is profitability. And if it is less than 1 or less than 0, it means loss. So net present value formula for similar cash inflows is minus cash outflow, ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, प्लस कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो वो अमाउंट है जो आपको ये पैसा इन्वेस्ट करने के नतीजे में मिलेगा, और साथ हम यूज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। नेट प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला फॉर नॉन सिमिलर कैश inflows. Minus cash outflow is your initial investment, and cash flow of period 1 divided by 1 plus I raised to power 1 plus cash flow
2 for second period cash inflow divided by 1 plus I raised to power 2 and so on. Formula for PVIFA or present value of interest factor of annuity is 1 minus 1 plus I raised to power minus n divided by I, in which I represents interest rate or opportunity cost and minus n or n means time period. And formula for PVIF, present value of interest factor, is 1 plus I raised to power minus n or 1 divided by 1 plus I raised to power n. So in similar cash inflows, you can use PVIFA, and non-similar cash inflows, you can use present value of interest factor formula of 1 plus I raised to power minus n or 1 divided by 1 plus I raised to power n. Now we are going to discuss some practical questions related to net present value. For example, if opportunity cost of capital is 10%, calculate NPV of both projects in case of mutually exclusive projects. Which project is better to invest? First of all, understand this opportunity cost of capital. It means that if you are not going to invest in these projects and you just simply take your money and go to bank and deposit your money, then bank will give you 10% of interest rate. So if you sacrifice this opportunity, then you will choose to select either this project or this project. So that is the meaning of opportunity cost of capital. So there are 5 years. In project number A, you are going to invest $500 or rupees, and it is your initial investment. That is why it is given in minus sign. And in result of this investment, you are going to get $400 in first year. In second year, you will get $400. In third year, you will get $400. In fourth year, you will get $400, and same in fifth year, you will get $400. In project A, as you are watching that cash inflows, these 400 are cash inflows and this is outflow. These inflows are similar, but in project B, the cash flows are also similar. If you invest $500 into project B, then you will get $450 in year 1, $450 in year 2, $450 in year 3, and so on. So this example represents the similar cash inflows. So now we are going to apply the formula of net present value project A is equals to cash outflow of project A, that is minus 500 plus cash inflow of project A, and cash inflow of project A is 400, and apply the present value of interest factor of annuity formula here. This is in fact a factor. And how can we calculate this factor? Interest rate is 10% and time period is 5 years. So here we are going to calculate the factor. So formula is 1 minus 1 plus I raised to power minus n divided by I. So n is 5 years and interest rate is 0.10. Always use interest in fraction. So 1 minus 1 plus 0.10 raised to power minus 5 divided by 0.10, and present value interest factor of annuity is 3.790.
So here we will put 3.790, and when we calculate it, the net present value of project A is 1016. After that, net present value of project B. This is not project B, but it is project A. Okay. So now we are going to calculate the NPV of project B. Cash outflow project B is minus 500. So minus 500 plus cash inflow project B. Cash inflow project B is 450. So $450 here, multiply by present value of interest factor of annuity at 0.10 interest rate or 10% interest rate, and time period is 5 years. So PVIFA is 3.790, and after calculation the net present value of project B is 1205.5, and factor is given here. So NPV of project A is 1016 and NPV of project B is 1205.5. So project B is worth more because NPV of project B is greater than NPV of project A. You can calculate or see the PVIFA or present value of interest factor of annuity through table also. Here your interest rate is 10% and time period is 5 years. So go to present value of interest factor of annuity table, not PVIF, PVIFA table. So at 10% interest rate in 5 years, annuity factor is 3.7908. So 3.7908 you can use here. So it is the manual way to calculate PVIFA, and through annuity table of present value of interest factor of annuity you can also check from here that what is PVIFA at the rate of 10% in 5 years. Here NPV, if NPV is greater than 0, which means profitability, and NPV is less than 0, which means loss. So make correction here. So thank you very much. In next topic we will discuss more about it.